जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम सेटल। मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। अंबालाल साराभाई एंटरप्राइज लिमिटेड, एंटरप्राइज लिमिटेड वर्सेस केएस इंफ्रास्पेस, केएस इंफ्रास्पेस एलएलपी लिमिटेड एंड अदर्स, एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी लिमिटेड एंड अदर्स, 2020 सुप्रीम कोर्ट, 2020 सुप्रीम कोर्ट, 2020 सुप्रीम कोर्ट। इसको समझना पहले, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या है, what honorable supreme court had said upon this, and this is under section 36 and 37 of SRA, 36 and 37 of SRA. Now what honorable supreme court has said in this case? We have understood injunctions. In injunction we first understood temporary injunction. In temporary injunction, there are three essentials which the court will look into consideration before giving you the temporary injunction: prima facie case, balance of convenience, irreparable injury. What is meant by prima facie case? What been laid down this judgment? Prima facie case का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया है that at the time when the party is seeking the relief of temporary injunction, even prima facie party have to prove that, sir, please look these case and these facts, and as per the relief of temporary injunction is concerned, प्राइमा फेसिली ऐसा लग रहा है कि इस केस में मुझे ही इन फ्यूचर रिलीफ मिलेगा इन फॉर्म ऑफ परमानेंट इंजंक्शन भी. Therefore, sir, for the temporary purpose, please grant me a temporary injunction so that the property could be preserved, protected and prevented from the party who is interfering or restraining my right or liberty to exercise my property. मतलब आपको प्राइमा फेसिली भी ये प्रूव करना है कि हाँ सर देखिए ये मेरा राइट है टीआई लेने का, बिकॉज ये प्रॉपर्टी भी मेरी है एंड दिस पर्सन इज इंटरफेयरिंग विद माय राइट ऑफ प्रॉपर्टी. प्राइमा फेसिली आपको दिखाना है बस. फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी के पेपर्स शो कर दिए. दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि आपको अपना कंडक्ट भी सही रखना है. इट शुड नॉट बी सो दैट यू आर योरसेल्फ रॉन्ग ऑन योर पार्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद ही गलत हो. पता चला कि आप पहले उसकी प्रॉपर्टी में एंटर करके उसकी प्रॉपर्टी तोड़ दी, अब वो आपकी प्रॉपर्टी में आया आपकी प्रॉपर्टी ब्रेक करने, अब आप मांग रहे हो टेम्परेरी इंजंक्शन because the court will not grant because you yourself wrong on your part because you also have committed the destruction over his property or of his property. ये बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने. अब लिखिए प्लीज जजमेंट को. इट वॉज हेल्ड डेट a plaintiff seeking TI मतलब temporary injunction, a plaintiff seeking TI in a suit for SP will therefore have to establish a strong prima facie case, have to establish a strong
prima facie case on the basis of undisputed facts, full stop. The conduct of the plaintiff will also be a very relevant consideration for the purpose of injunction. Full stop. Continue. The discretion at this stage have to be exercised judiciously and not arbitrarily Now next heading, please write down. Perpetual injunction when granted. In bracket write down section 38. Perpetual injunction when granted. In bracket write down section 38. सेक्शन 38. चलिए, बट बिफोर डेट बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, आपको प्लीज़ बुलाना पड़ेगा बिकॉज आप सबसे साइड दैट्स है. प्लीज़ किसी को बोल दीजिए प्लीज़ एसी ऑन कर दें बस. मैंने बोला था इनको लेकिन बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस बताया तुम. एसी चला दीजिए, मैंने उनको बोला था, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है क्लास में. ठीक, अभी बता दूँ, नोट्स के बाद बताता हूँ आपको. हाँ चलिए प्लीज़. हाँ चलिए लिखिए. It is important to mention that for perpetual or permanent injunction to prevent the breach of an obligation existing in favor of plaintiff following conditions must be fulfilled. First point. Defendant must have
defendant must have an obligation towards the plaintiff, an obligation towards the plaintiff, an obligation towards the plaintiff. Second point, such obligation may be expressed or implied, may be expressed or implied. Third, the defendant is about to make, the defendant is about to make breach of that obligation, about to make breach of that obligation, breach of that obligation. Change the para, write down. हेडिंग डालना है, ओब्लिगेशन अराइजिंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ओब्लिगेशन अराइजिंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट, अराइजिंग ओब्लिगेशन अराइजिंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ब्रैकेट ऐड नो, सेक्शन 38 क्लॉज 2, सेक्शन 38 क्लॉज 2, सेक्शन 38 क्लॉज 2. Now please write down under this the conditions essential to the applicability of this section to the applicability of this section are, to the applicability of this section are, first point, the contract must have two agreements, the contract must have two agreements, that is, फर्स्ट पॉइंट के अंदर भी एक और फर्स्ट पॉइंट डालिए, दैट इज फर्स्ट पॉइंट an affirmative agreement to do certain act and second point, a negative agreement not to do a certain act, second point, अब second point आएगा, the negative part must be separated from the rest of the contract, third point, the applicant must have fully carried out his part of the contract, तो ओब्लिगेशन अगर है आपकी कॉन्ट्रैक्ट में तो उसमें ये चीज होनी चाहिए, और इस चीज से हमने कहा कनेक्ट किया सेक्शन 42 से, जहां पे नेगेटिव चीज उसको रोक सकते हो करने से, समझा था ना 42 वो वाली बात कर रहा है. नाउ प्लीज राइट डाउन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल
For example, A contract to sing at B's theatre. A contracts to sing at B's theatre for 1 year and not to sing elsewhere. 1 साल तक मेरे थिएटर में ही गाना है, कहीं और नहीं गाना. And not to sing elsewhere. Full stop. Continue. To sing at B's theatre. To sing at B's theatre for 1 year. For 1 year is a contract. For 1 year is a contract which depends upon the personal qualifications of the parties cannot be SP. Full stop. But the negative part of this contract that A will not sing elsewhere, can be specifically enforced full stop. Hence A can be compelled by injunction not to sing elsewhere. नेक्स्ट हेडिंग. अभी तक हमने सेक्शन 38 क्लॉज 2 लिखा, 38 क्लॉज 3 क्या लिखेंगे? हेडिंग डाली प्लीज. परपेचुअल इंजंक्शन when defendant invades or threatens to invade the plaintiff's right threatens to invade the plaintiff's right, ब्रैकेट में सेक्शन 38 क्लॉज 3, सेक्शन 38 क्लॉज 3 इन ब्रैकेट, सेक्शन 38 क्लॉज 3. Write down under this. Another situation where the court may grant PI. The court may grant PI is when the
the defendant invades the plaintiff's right in the following cases. First point, हेडिंग की फॉर्म में लिखिएगा. फर्स्ट पॉइंट प्लीज राइट ऑन फॉर्म ऑफ हेडिंग. वेयर द डिफेंडेंट is a trustee of the property for the plaintiff. Is a trustee of the property for the plaintiff. Property for the plaintiff. इस हेडिंग के अंदर एक वो लिख लीजिए, पैरा लिख लीजिए. वेयर द डिफेंडेंट इज अ ट्रस्टी, वेयर द डिफेंडेंट इज अ ट्रस्टी, where the defendant is a trustee of the property for the plaintiff, and he invades upon the plaintiff's right to enjoyment of property, upon the plaintiff's right to enjoyment of property then the court may grant PI. सेकेंड पॉइंट हेडिंग में, where there exist no standard for ascertaining where there exists no standard for ascertaining the actual damage caused इस हेडिंग के अंदर एक एग्जाम्पल लिखिएगा प्लीज. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल Mr. A pollutes the air with smoke A pollutes the air with smoke so as to interfere materially with the physical comfort of B and C who carry on business in a neighboring house full stop. B and C may sue for an injunction
B and C may who carry on business in a neighboring house, full stop. B and C may sue for an injunction, to restrain the pollution, on the ground that there exists no standard for ascertaining the actual damage caused, or is likely to be caused, by the invasion. Third point, heading, where the invasion is such that compensation in money would not afford adequate relief. For example, a professor of law delivers lectures in the class which are noted by B, a student, full stop. Subsequently B publishes those notes in his name, full stop. A can file a suit for an injunction. A can file a suit for an injunction to restrain B from publishing those notes as these are property of A. Fourth heading, last heading under this section, where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of
judicial proceedings, to prevent a multiplicity of judicial proceedings, For example, A pollutes the air with smoke. A pollutes the air with smoke so as to interfere materially with the physical comfort of entire locality full stop. Any member of the locality may sue for an injunction to restrain the pollution. Full stop. Continue. The court may grant PI to avoid the multiplicity of judicial proceedings. नेक्स्ट हेडिंग, अब दूसरी हेडिंग लिखिए, मैंडेटरी इंजंक्शन, सेक्शन 39. मैंडेटरी इंजंक्शन, सेक्शन 39. सेक्शन 39, मैंडेटरी इंजंक्शन, सेक्शन 39. Now please write down. When a party is compelled, or commanded, or ordered by the court, to do something by an injunction, is called mandatory injunction. MI is called MI. Full stop, change the para. MI is granted when following two conditions are fulfilled. When following two conditions are fulfilled.
following two conditions are fulfilled. First point. The court has to determine what acts are necessary in order to prevent a breach of an obligation. Second point. The requisite acts must be such as the court is capable of enforcing. Change the paradigm. For example, write down A by new building A ने एक बिल्डिंग बनाई. A by a new building obstructs light ये लिखा है ना, बाय न्यू बिल्डिंग है, BUY वाला नहीं है, BY वाला है, BY बाय अ न्यू बिल्डिंग obstructs light to the axis. हाँ, बाय BY वाला अपनी बिल्डिंग के थ्रू कर रहा है वो. A by a new building obstructs light to the axis and use of which हाँ ACCESS हाँ वाला ACCESS axis and use of which B has acquired a right under easement act सुखाचार under easement act full stop. B may obtain an injunction not only to restrain A from going on with the buildings, but also to pull down so much of them as obstructs B's light. लास्ट हेडिंग, उसके बाद हमारे नोट्स हो जाएंगे. एज obstruct as B's lights full stop. नो मैंडेटरी इंजंक्शन, मतलब किन किन केसों में कोर्ट में MI नहीं देगा. नो मैंडेटरी इंजंक्शन, नो MI. फर्स्ट पॉइंट, इन चीज़ों में केसेस में MI नहीं मिलेगा.
where compensation of money compensation money would be an adequate relief to the plaintiff Second point, where the balance of convenience is in favor of the defendant. Third point, where the plaintiff is also guilty of permitting the defendant to do the wrongful act before coming to the court. This means वो खुद ही कह रहा है कि भाई तोड़ो, करो, इंट्रूड करो, घुसो मेरी प्रॉपर्टी में, खुद ही वो MI मांग रहा है फिर. Fourth point, last point, to obtain MI, the burden of proof is on the plaintiff to prove his own case, full stop. If he fails to prove his case, he will not entitled for MI in his favor. अब एक पैराग्राफ चेंज करिए, एक नोट डालिए, नोट करके लिखिए, NOTE, नोट करके लिखिए बस. As per section 40 of SRA, a party can together with the relief of PI and MI, can also seek compensation from the other party. Can also seek compensation from the other party. अब देखिए सेक्शन 41 में कोई नोट्स नहीं है, आपको सिर्फ बेयर एक्ट से ही आपके नोट्स हैं, जो आपके बेयर एक्ट में लिखा है वही आपके नोट्स हैं. सेक्शन 41 में हमने क्या समझा था कि आपका सेक्शन 41 में कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है इन केसेस में इंजंक्शन देना, जो हम लोगों ने समझ लिया था. ठीक है. Subscribe for more content.